Hello students, I think you all completed your first chapter, and that is crop production and management. Now, today we will start our second chapter, that is microorganism. It is microorganisms. Friend or foe? What do you think? Microorganisms are friend or foe? क्या हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे हैं या बुरे हैं? Definitely, some of microorganisms are helpful for us, but some microorganisms are harmful for us. First of all, we know what is microorganism. What is microorganism? Microorganisms are also living organisms, but where they are? Can you see with your naked eyes? I think no, because they are very tiny and we can't see, and we does not see with our naked eyes. So what is the definition of microorganisms? Those organisms which we can't see our naked eyes. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आंखें बंद करने से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं. दैट मीन्स वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स और सम डिवाइस टू सी दिस माइक्रो organisms. Okay, and the device or instrument name is microscope. Microscope की हेल्प से हम इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. Okay, is there any definition or simple definition? Organisms which we can see under the microscope. Organisms which we can see under microscope are called microorganisms. Okay, there are two definitions. जो भी आपको इजी लगती है वो आप लिख सकते हैं. Is that clear? And we also called this microorganisms are microbes or microscopic organism. Okay, so now come to the types or classification of microorganisms. There are 5 microorganisms. There are 5 microorganisms जिसे हमें पढ़ना है. Okay, micro means बहुत ही छोटे. Okay, there are 5 types of microorganisms. That is, first, bacteria. Can you tell me what is bacteria? Definitely bacteria is microorganism. Is that clear? Now, second is fungi. Fungi is also microorganism. Third one is protozoa. Fourth, algae. And fifth one is virus. Oh, virus. You know what is this? Virus. क्या चल रहा है अभी? Definitely corona. This is also virus. As I tell you, some of microorganisms are helpful for us and some of microorganisms are
harmful for us. Okay, these are the classification of microorganisms. Some of them are single celled organisms, and some of them are multi-cell or multicellular organisms. We are also organisms, living organisms, but we has number of cells. हमारी बॉडी में बिलियन सेल्स होते हैं. But this microorganism, some of these are microorganisms are unicellular और single celled. कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, single celled होते हैं. Okay, single celled and multicellular. But where they live? These all microorganisms live in every type of circumstances or in everywhere in the atmosphere. Maybe hot, maybe cold, maybe forest, desert. तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द बैक्टीरिया. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड microorganism. Bacteria is single celled microorganisms. Okay, can be spherical, can be rod like structure or spiral. Okay, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? Maybe spherical, just like a ball. Maybe rod shaped का हो सकता है. और maybe स्पाइरल. कैसा हो सकता है? या तो स्फेरिकल हो सकता है या रॉड शेप का हो सकता है और या स्पाइरल हो सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया. इज दैट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल इज Codobacter. Example of bacteria is Codobacter. This is the example. Is that clear? This is the unicellular. That means single celled. Bacteria कैसा होता है? Single celled होता है. Is that clear? Now come to the fungi. Fungi look like plant. Fungi कैसा होता है? Plant जैसे दिखते हैं. Okay, but actually they are not plant. Fungi is just look like plants, but actually they are not plant. What is the reason behind that? The reason is absence of chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है. क्लोरोफिल. But they look like plant. Is that clear? Or all the microorganisms are living organisms. That means they need some food for survival. So fungi eat dead and decaying. यानी जो खत्म हुई चीजें होती हैं उन्हें खाकर ये सरवाइव करता है. Examples of fungi: yeast. You know about yeast? Very good. Third one is protozoa. Protozoa are heterotrophic. What is the meaning of heterotrophic? That means organism which depends upon others. ऐसे organisms जो किस पर डिपेंड करते हैं?
दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? बैक्टीरिया। देन सेकंड वन इज व्हाट? फंजाई। एंड थर्ड दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज हेटरोट्रॉपिक। ऐसा होता है heterotrophic. And what is the meaning of heterotrophic? It depends upon others. दूसरों पर निर्भर करता है. Is that clear? Okay. And example. अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं प्रोटोजोआ? मोस्टली एक्वेटिक. कैसे होते हैं? यानी कि पानी में पाए जाते हैं. Is that clear? Very good. And what about examples? Amoeba. Example is amoeba. Now come to the fourth one is algae. Algae is another microorganism, and this is also available in aquatic condition. That means ये भी कहाँ पाए जाते हैं? पानी में ही पाए जाते हैं मोस्टली. ठीक है. And last one, that is virus. There are so many viruses which are harmful for us. That's why we are in home due to the corona. Is that clear? So these are the classification of microorganisms. First one, that is bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. Some of them are unicellular and some of them are multicellular. Is that clear? Now next topic is uses of microorganism. As we know, some of microorganisms are useful and some of microorganisms are harmful. So now find which microorganisms are helpful for us, so we can use for our need. वैसे भी हम इंसान छोड़ते तो किसी को भी नहीं है ना, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना. ओके, चलिए. यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब हम बात किसकी करते हैं? यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. चलिए, किसी चीज को छोड़ा नहीं है तो इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं हम, है ना. ओके. Now uses of microorganisms in different sectors or in different areas. First one, that is domestic. क्या किसी को याद आ रहा है डोमेस्टिक में हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स का कहाँ यूज करते होंगे? देन सेकंड, कमर्शियल पर्पस. ओके, कमर्शियल पर्पस में कहाँ यूज होता है? थर्ड वन, दैट इज agricultural. Fourth one, medicinal. And fifth one is environment. Okay, everything is important for us. Okay, agricultural से कुछ याद है? Agricultural practices. You know about agricultural practices in first chapter? Okay, if you have any doubt then please ask me. So uses of microorganisms in domestic purpose. ब्रेड खाना तो सभी को पसंद है ना. वेरी गुड. और आई थिंक अभी तो घर पर हो आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खा रहे होगे, है ना. ओके, लाइक इडली, डोसा, कर्ड. ओहो, ये बनाया कैसे जाता है? इडली, डोसा, कर्ड.
Yes, with the help of microorganism. With the help of microorganisms. ओके, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, कोई एग्जांपल? ओके, एग्जांपल इज यीस्ट. यहाँ पर हम डोमेस्टिक और कमर्शियल के लिए यीस्ट का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? अबाउट कमर्शियल, कमर्शियल में एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है. नाउ कम टू द एग्रीकल्चरल. एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल है भाई? You know about agricultural? Fungi and bacteria break down complex minerals. You know about complex minerals? Complex. You know about complex number? Complex minerals को क्या करता है? Break down करता है. इसका break down करता है. Complex mineral का. You know about ना complex number? Very good. Into simple form. Break down the complex minerals into simple form for the usefulness of plants and crops. Okay? And the example are fungi and bacteria. Fungi and bacteria. Right. Now come to the medicinal use for making antibiotics. Okay, for making antibiotics, vaccines. Is that clear? And environment. What about environment? For the cleaning of environment. For the cleaning of environment. That clear? These are the uses of microorganisms in 5 different fields which are very useful for us in our daily life. Is that clear? Now, some of microorganisms like virus. What? Virus. Virus are harmful for us due to some viruses causes diseases. Is that clear? So first of all, we classified the diseases. Is that clear? Okay, there are two types of diseases. First one is communicable and second one is non-communicable. You know the meaning of communicable and non-communicable? Definitely communication में आने से और communication में ना आने से. That clear? Classification of diseases. There are two types of diseases. Classification of diseases. First one is communicable and second one is non-communicable. You know about some diseases which belongs to communicable and which belongs to non-communicable diseases? Huh? Just think about that. Okay. Now, communicable disease. Those diseases which spread from one person to another person. Those diseases which spread from one person to another. From one person to another. Spread from one person to another. एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने वाली डिजीजेस को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीजेस बोला जाता है. ओके, डू नॉट स्प्रेड from one person to another person. From one person to another person. That clear? This is the classification of diseases.
Okay, like tuberculosis, cholera are the example of communicable diseases. Non-communicable diseases like heart attack, asthma is the non-communicable diseases. Okay, here one word is used, that is spread. Spread. So there are ways of spreading diseases. Okay, ways of spreading. Ways of spreading. There are different ways of spreading the diseases. Okay, डिजीज भी स्प्रेड होने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढती है ना. Okay, so from infected person, first one is from infected person, second one through insect and animals, and third one is through contaminated food. यानी थोड़ा ख़राब खाना खा लिया, पेट में दर्द होने लगा, मुंबई स्कूल नहीं जाना है, आज पेट में दर्द हो रहा है ना. कभी कभी बहाने भी मारने पड़ते हैं. Okay, now come to the ways of spreading the diseases. So there are three ways of spreading diseases. First one is from infected person. Ways of spreading diseases. There are three ways. First is infected person. Okay, from infected person, infected person से कैसे? Through air, water, something else, food. Okay, through air, water and food. And one more thing, that is physical contact. That is physical contact. अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं. Why? Due to corona. Okay, because corona is virus. And second way is through insect and animals. Through insect and animals. Through insects and animals. This is the second way. Is that clear? And third one is through contaminated food. Through contaminated food. वही रात का खा लिया और सुबह सुबह पेट में गुड़गुड़ हो रही है. Like that. Okay, so example, spreading of diseases from infected person. Example is common cold. Okay? स्कूल में बैठे हैं, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ बैठना है मुझे, मैं बैठूंगा, उसकी सर्दी मैं भी लूँगा, और साथ में बैठते बैठते क्या हुआ, थ्रू एयर हमें भी कॉमन कोल्ड 2-3 दिन के बाद हो जाता है. ओके, नाउ सेकंड, दैट इज इंसेक्ट्स. सभी के दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, मच्छर. हाँ, डेफिनेटली मॉस्किटो. डेफिनेटली मॉस्किटो. मलेरिया. थ्रू इंसेक्ट्स मलेरिया एंड डेंगू. मलेरिया एंड डेंगू. ओके, what about animals? Definitely animals के थ्रू rabies.
ये किसकी वजह से होता है हमें? मॉस्किटो। और ये होता है डॉग, मंकी। ये सब अगर हमें काट लें तो क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। एंड एग्जाम्पल इज for through contaminated food, it is food poisoning। खराब खा लिया और food poisoning हो। So these are the ways of spreading diseases. Okay, got it? Okay, now come to the diseases causing microorganism. Disease causing microorganism, तो in animals and in plants। okay, अब हम कुछ ऐसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो एनिमल्स और प्लांट्स में होती है, बट किसकी वजह से होती है? ऐसी ही चीज़ों की वजह से हो जाती है कभी कभी चीज़ें जो हमें दिख नहीं पाती है। ओके, तो ऐसी ही कुछ डिजीजेस causing microorganisms in plant हाँ पता है भाई, एनिमल लिख लिया है, इधर प्लांट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उनकी यही आदत अच्छी है, जो चीज़ सोचनी है, जो चीज़ देखनी है वो नहीं देखते हैं। प्लांट की जगह एनिमल लिख दिया सर ने, सर आपने प्लांट बोला एनिमल लिख दिया, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें बात की बात है, जहाँ पर फोकस करना है वहाँ फोकस कीजिए। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड इन प्लांट। ओके, सो इन एनिमल्स, एंथ्रेक्स, you know, anthrax is the disease which causing by microorganism, and this microorganism is bacteria. Okay, second disease is foot and mouth disease due to the virus, ringworm due to the fungi. Okay, anthrax and ringworm, and third one is what? Definitely second one is, okay, that is foot and mouth। foot and mouth किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। एंड ringworm due to the fungi। okay, now in plant there are some diseases. It is citrus canker, rust of wheat, yellow bean. Okay, yellow bean, mosaic of bindi, you know, lady finger। okay, lady finger। जो भिंडी के पौधे होते हैं वो कैसे होने लगते हैं? पीले होने लगते हैं। तो फर्स्ट वन इज citrus canker, second one is yellow bean, mosaic of bindi, yellow bean, mosaic of bindi। okay, lady finger। and third one is rust of wheat। okay, these are the diseases causing by microorganisms in plant। Is that clear? Now next topic, that is food preservation। food preservation, this is also important topic because microorganisms क्या कर सकते हैं? हमारे फूड को खराब कर सकते हैं। जैसा भी हमने देखा था कंटेमिनेटेड फूड के बारे में देखा था, है ना, कंटेमिनेटेड फूड के बारे में। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? फूड प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर टू मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड एंड सेकंड वन इज फिजिकल मेथड। ओके, नाउ
come to the food preservation with the help of chemicals or with the help of physical method. What? Food preservation. Food preservation by chemical method or by physical method. Okay, I will explain only one or two methods in simple language. Okay, in chemical method, you know about pickles, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, बहुत पसंद है ना? वेरी गुड. दिस इज द केमिकल मेथड. क्या किया जाता है? उसमें नमक डाला जाता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट. विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, तभी उसे हम लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ शुगर. वेरी गुड. Sugar is also useful for food preservation, and oil, vinegar, and some preservative available in market also. Okay, what about physical method? About physical method, chilling, freezing, heat and cold treatment. Heat and cold treatment, this is very important. Heat and cold treatment. इससे पहले क्या बोला? फ्रीजिंग. फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं. बहुत सी चीज़ों को क्यों रखा जाता है? डेफिनेटली फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, ताकि आपका फूड स्पॉइल ना हो. ठीक है. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल मेथड. जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं. ओके, कैनिंग इज ऑल्सो फिजिकल मेथड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन. ओके, ड्राइंग, चीज़ों को सुखाना, फूड को सुखा कर रखना, दिस इज ऑल्सो द फिजिकल मेथड. इज दैट क्लियर? सो देर आर टू methods for food preservation. First one is chemical method and second one is physical method. Is that clear? This is also important topic. Now last topic in this chapter, and this is very important topic for us. You know which gas is highest percentage in the atmosphere? Yes. Okay, nitrogen. Okay, nitrogen. What is the percentage of nitrogen in atmosphere? What? 78? What? 72? According to me, I think 78% is the nitrogen present in atmosphere, or 72. Little bit confusing. Okay, just check out in your book. So last topic is nitrogen fixation. Nitrogen fixation and nitrogen cycle. फर्स्ट चैप्टर में भी नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा था. मैंने जो आपको स्लाइड्स दी थी उसमें नाइट्रोजन साइकिल दिया हुआ है. आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. व्हाट इज नाइट्रोफिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज नाइट्रोजन fixation. As we know very well, there are large amount of nitrogen present in atmosphere. Okay, so this is the atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen. Is that clear? What will happen with this atmospheric nitrogen? You know about lightning?
ड्यूरिंग रेनी सीजन एक आवाज़ आती है, गड़ 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 गड़, और फिर लाइट चमकता है. हाँ, दिस इज द लाइटनिंग. डेफिनेटली दिस इज द लाइटनिंग. ओके, सो दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन comes towards the ground. ओके, कहाँ आती है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? कहाँ आती है? with the help of some bacteria. The help of some bacteria. Is that clear? Or with the help of lightning also. लाइटनिंग की वजह से भी ये नाइट्रोजन कहाँ आता है? नीचे आता है, सॉइल में मिल जाता है. प्लांट्स लगे हुए हैं. प्लांट्स अपटेक्स दिस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. ओके, क्या करता है? अब एटमॉस्फेयर में है तो किस फॉर्म में होगी? सॉलिड, लिक्विड? डेफिनेटली गैसियस फॉर्म में. किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में. ओके, so this atmospheric nitrogen comes towards the ground, and this atmospheric nitrogenous compound uptake by plants. उसी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेता है. और प्लांट्स को ही कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं. प्लांट्स को ही एनिमल्स खाते हैं. इससे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने, लाइटनिंग ने ग्राउंड पर लाया, सॉइल में मिक्स किया. सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट ने उसके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को, यहाँ पर भी क्या किया? बैक्टीरिया ने ही उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर कर क्या किया? प्लांट के लिए यूजफुल बनाया, और प्लांट ने उसे ले लिया. एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया. ठीक है ना? वी ऑल डिपेंड अपॉन द प्लांट्स और क्रॉप्स. अब मे बी पॉसिबल कि इस एनिमल की डेथ हो जाए या ये एक्सक्रीट करे. इज दैट क्लियर? मे बी दिस एनिमल्स आर डेड और दे एक्सक्रीट some waste, and this excrete or dead animal again mixed up into soil. वो वापस से कहाँ मिक्स हो जाएगा? सोइल में हो जाएगा. एंड अगेन बैक्टीरिया क्या करेगा? इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को वापस से गैस में कन्वर्ट करेगा, और ये गैस वापस कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चले जाएगा. तो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल. इज दैट क्लियर? मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आई थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. सो दिस इज द whole chapter, that is microorganism, friend or foe. So what we learned in this chapter? Microorganisms, those organisms which we can't see with our naked eyes, or organisms which we can see under the microscope. We learn about types of microorganisms. There are 5 types of microorganisms, and their examples and uses of microorganisms in different 5 fields. 5 microorganisms, 5 different fields. That is what 5 fields are: domestic, commercial, medicinal, agricultural, and environment. And we also learned about some diseases. Is that clear? So thank you. This is all about for today and for this chapter. Bye bye.